हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, जरा बताएंगी आप? कोरियन गाइस के ड्रामा वर्सेस रियलिटी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो ले आए हैं आप लोग रिक्वेस्ट। आपके क्या बनता है? लाइक कमेंट और चले देखते हैं। पू इन कोरिया की वीडियो है। पू ने बताया क्योंकि वो उधर रही हैं तो उनको पता अच्छे से रियलिटी पता है के ड्रामा में क्या होता है और रियलिटी में क्या होता है और कोरियन गाइस कैसे रहते हैं उधर। कोरियन गाय के ड्रामा में बहुत ही मतलब कि ऐसे दिखते हैं और बहुत ही मतलब कि अलग उनकी पर्सनालिटी होती है। चलिए देखते हैं पू क्या कहती है, क्योंकि वो रही हुई है उधर और उनको अच्छे से पता होगा। और पू का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना। उनको भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना और हमें भी कर दो। Here we go. So welcome back to my channel. Welcome. Pretty much sure that most of you guys that click this video are interested in Korean life Yes. and Korean हाँ lifestyle. यार, And I क्योंकि hear मैंने so देखना many मैंने people जाना that उधर। want to leave their own country and come here Yes. because nowadays Korea is like the dreamland हाँ. of youngsters and especially girls due to the rising popularity of K-pop Yes. and K-drama, Yes. and everyone feels like Korea is the best place to live and it's the place where you can find happiness and you can be yourself and feel better. I personally believe Okay. that happiness doesn't come from a place but from the people that are around you. If you want to come to Exactly. Korea because of what you see in K-dramas or what you listen in K-pop song, probably this video is gonna be a little bit disappointing. Let me tell you one thing. What you see in Why? K-drama is probably reflects the 50% of the real life here in Korea, which means Okay. that the places they are shown, so the places that you see in K-dramas, the food and the fashion style and atmosphere, it's what it is here in actual life. But Okay. if you are thinking that, oh, Korean boys are like this and they're very caring and stuff like that, Korean guys are like any other guys in the world. Like literally they are guys and they like what guys like. Foreigner people really fantasize about Korea because what they see in K-dramas, but the reality is that Korean television, so Korean dramas are aired on Korean television and everyone can see and everyone can watch the television, like kids included. In K-dramas, all those cute scenes and all those like very naive, innocent love moments are because they are going to be aired on national TV and kids can watch it. So that's why you see those like slow motion kisses, like touch, and that's all. They don't do anything. And that's because the TV is censored. You can't show some stuff because kids can watch it. And that doesn't mean that Korean guys in real life are like that naive or that innocent when it comes to that topic. I feel like there is some sort of pressure for Korean guys to be in a certain way because they are displayed in a certain ways in K-dramas. Here on Korean television, you can't even show people smoking. They actually blur out the cigarette or the smokes because kids can see it and have a bad impact on kids. So all this kind of stuff are very censored and very limited, and that's the reason why the final product in K-dramas that you see, it's not like the reality. You have to portray things in a certain way. And to be honest, if I think about K-dramas that I watched before coming to Korea, I can't think of any in which I've seen somebody smoking or doing something very steamy, because it's highly censored. So this is the reality, and I'm sorry for breaking your dreams. It's just not because of K-dramas. It's also because a lot of YouTubers, they portray the best of Korea, like the coffee shop and the nightlife and the places, the food. So everything looks so appealing and pleasing, but I think it's very important to share the like reality, everyday reality aspects, because if you come to here, you're not gonna always hang out at the coffee shop. You're not always gonna go to expensive restaurant and eat expensive food, but you're gonna stay in a home and try to make money and try to survive. So it's important for you to know how the reality is. And if you are thinking about coming to Korea because you want to work here, and so many of you have been asking me like, how can I apply for a job here, or how can I work here in Korea as you do? Let me just tell you that it's very hard even for youngsters nowadays, Korean youngsters, to find job in Korea, because here the competition is so much. If you want to come here and work here,
I don't want to disappoint you, but the thing is that it's very hard. If you're a foreigner and you come from English speaking country, you can easily find a job as an English teacher in school. You can get a good permanent position. But if you come from another country and English is not your first language, it's gonna be much harder for you to find job. अगर English perfect आती हो, really hard. Plus, here in Korea, nowadays, even for youngsters, it's very hard to find a job. If it's harder for them to find a job, just imagine how hard it can be for you as a foreigner to manage to find like a good job. Of course, it's not impossible, and if you have the resources and the money and the time, you can achieve anything you want. So I don't want to disappoint anyone, but I feel the need of telling you guys how things are. And I don't want to give you like a fake reality just to make you feel better or happy, but that's how things are. Well, that's all for now, and I hope you like this video, and don't forget to like and subscribe. Love you. Bye bye. सही कहा, जो होता है वो दिखता है। हाँ, क्योंकि के ड्रामा में मोस्टली मतलब ये होता नहीं। हाँ, और ये मैंने भी सुना है उधर की वो लाइफ बहुत ही हार्ड है, एक्सपेंसिव बहुत है वो कोरिया, बहुत ही एक्सपेंसिव है, उधर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तो मतलब कि कोरियन जो भी होता है, कोरियन का जो भी कोरिया जाता है, जैसे पू अभी गई हुई है, वैसे पाकिस्तान की भी एक व्लॉगर थी सादिया, वो भी मतलब कि कोरिया में रही हैं, वो भी कहती थी इधर उधर की लाइफ बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ना वो यूट्यूब से भी मतलब कि अर्निंग करती थी और जॉब भी करती थी। इसी तरह अंदाज़ा लगा लो कि तो कितनी हार्ड होगी और बहुत ही मतलब कि हार्ड, एक्सपेंसिव तो बहुत है कोरिया, ये मुझे पता है। और ये भी बताया कि कोरियन को मतलब कि जॉब मिलना इतना मुश्किल है उधर, तो मतलब कि बाहर से जो फॉरेनर है उनके लिए भी हार्ड होगा काफ़ी, और बहुत कुछ बताया। और मतलब इन्फॉर्मेशन दी ना, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी दी है और मज़ा आ गया यार। वीडियो अच्छी है, देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ना के ड्रामास में तो मोस्टली वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं कि कोरियन की फन है। अब हर वक्त थोड़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में घूमोगे, नाइट लाइफ एंजॉय करोगे, और के ड्रामा के बॉयज आप मिलोगे, ऐसे देखेंगे आपको, ये ऐसा तो नहीं होता, ये तो सिर्फ ड्रामास में होता है। और बस मैं जाऊंगा कोरिया तो सिर्फ घूमने फिरने जाऊंगा, और आउटिंग देखने के लिए कोरिया कैसा है। वैसे उधर अगर परमानेंट रहने के लिए लिहाज से बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए आपको ना मल्टी मिलियनर होना चाहिए, तब जाके आप उधर रह सकते हो। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं, आप अगर कोरिया जाना चाहें तो उधर परमानेंट के लिए जाना चाहेंगे या फिर घूमने फिरने, कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।